নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ যিটো 4 নম্বৰ লেসন মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰা নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি मेरी राजस्थान यात्रा अर्थात मोर राजस्थानर यात्रा पाठटो आलोचना करूँ। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। पिताजी ने अखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा। तो ये कथाषार तुम्हारे देखिसा उइदिन इनभार्टेड कमा भितरत आछे, इगिटा देखिसा इनभार्टेड कमा। तो ये कथाषार कैसे कोने कैसे पिताजी ने अखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा। देउताके अखबार माने बातरी काकतर एटा पेज निकिताक देखुवाई লৈ পিনি কৈছে কি বুলি কৈছে যে देखो बेटी सुआ हुंजनी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। जे आजिर बातरी काकतखনত एजनी स्कुलीया छात्रीये ताइर मुंबई यात्रार जी अनुभव সেই अनुभवखिनि এটা সুন্দৰ লিখনিৰে ব্যক্ত प्रकाश কৰিছে তেনেকে বুলি দেউতাকে বাতৰি কাকতৰ এটা পেজ দেখুৱাই লৈ পিনি নিকিতাক কৈছে। बेटी, तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। और देउताके কৈছে যে हुंजनी तुमिও जी आगर राजस्थान यात्रा जे राजस्थानলৈ গৈছিলা সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে তুমি এটা সৰু লিখনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰা। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा। তাৰপিছত নিকিতা কৈছে নিশ্চয় পাৰিম দেউতা, কিন্তু মই যে লিখিম সেই লিখনিটো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হ'বনে বাৰু তেনেকে বুলি সুধিছে। जिज्ञासा भरी नजरों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। और जिज्ञासा माने जानिবলৈ खूब उत्सुक হৈ লৈ পিনি তেনেকুৱা চকু খালেৰে তাই দেউতাকৰ ফালে चाहছিলে। अब से प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही, तुम्हारा लेख में स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। তাৰপিছত দেউতাক কৈছে নিশ্চয় প্ৰকাশ হ'ব हुंजनी, तुम लिखो तो सही, तुम लिखाचोन बा प्रथमे, तुम्हारा लेख में स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। और तुम लिखा তাৰপিছত মই নিজেই গৈ লৈ পিনি তোমাৰ সেই লিখনিটো গৈ লৈ পিনি বাতৰি কাকতৰ প্ৰকাশনৰ তাত গৈ লৈ পিনি মই নিজেই দি থৈ আহিমগে তেনেকে বুলি কৈছে। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठी और वो अपने पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। और बातरी काकतत ताई लिखनिটো प्रकाश হ'ব বুলি ভাবি লৈ পিনি কল্পনা কৰি লৈ পিনি তাই খুব আনন্দিত হৈ উঠিল। आँखों चमक उठी माने खूब आनंदित हो उठिल। और वो अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। और ताई जितो आगर राजस्थान यात्रा কৰিছিলে সেই যাত্ৰাৰ যিখিনি याद আছিলে সেইখিনি মনত পেলাবলৈ আগৰ যোৱা সেই ঘটনাবিলাক মনত পেলাবলৈ ধৰিলে। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। और তাৰপিছত निकिताই সেই राजस्थान যাত্ৰাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে এটা লেখ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ল'লে। मेरी राजस्थान यात्रा, मोर राजस्थानर यात्रा। तो तुम्हारे जिको आर्टिकल जेतिया पढ़ोते देखा जे तात एटा तुमार हेडलाइन थाके, टपिकर नाम थाके, ठीक है, कि बोली कय टाइटल थाके। गतिके এই তাইয়ে निकिताई जितु लिखिसे সেই লিখনিটোৰ টাইটেলটো দিছে मेरी राजस्थान यात्रा, मोर राजस्थानर यात्रा। इतना कि कैसे चुआ, राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। राजस्थान फुरार इच्छा मोर लराली कालरे परा आसिल, सरू कालरे परा आसिल। क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। कारण मैं राजस्थानर सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक रेगिस्तान, मरुभूमि, भोजन, खाद्य सम्भार और विभिन्न उत्सवर विषय मैं आगरे परा शुनी आहिছিলোঁ। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। और সেই কাৰণে राजस्थान फुरार मोर जी इच्छा है इच्छाটো আৰু प्रबल हो গৈছিল। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं
তো মেৰা মন খুচি চে ঝুম উঠা। আৰু দেউতাই যেতিয়া ক'লে যে এইবাৰ ঠাণ্ডাৰ বন্ধত আমি ৰাজস্থান ফুৰিবলৈ যাম বুলি দেউতাই যেতিয়া ক'লে, তেতিয়া মোৰ মনটো আনন্দত নাচি উঠিছিলে। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और राजस्थान যাত্ৰাৰ যি মোৰ অনুভৱ, সেই অনুভৱখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাই মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। তাৰপিছত কি বুলি কৈছে যে মা, পিতাজী, মেৰা ছোটা ভাই, মাক, দেউতাক আৰু তাইৰ সৰু ভাইক অৰ্ণৱ, সিহঁতে কি কৰিলে, গুৱাহাটী চে নয়ে দিল্লী তাক কি যাত্ৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈকে যাত্ৰা কৰিলে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। और राजस्थाনৰ আমাৰ প্ৰথমটো মঞ্জিল আছিল, উদ্দেশ্য আছিল যোৱা ক'লৈ, ৰাজধানীৰ যিখন ৰাজ্য হয় জয়পুৰ। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। और नতুন दिल्लीৰ পৰা জয়পুৰলৈকে আমি ৰেলগাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गए थे। আৰু সেই প্ৰায় 5 ঘণ্টাৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত ৰাজপুতৰ যিখিনি যোদ্ধা আৰু তাৰ যি বীৰংগনা, সেইবিলাকৰ সাহসিক কাহিনীবিলাকতে মই কি বুলি কৈছে, কাহানিও মে খো গৈ থি, তাৰমানে খো গৈছিল, তাৰমানে সেইবিলাক ভাবি চিন্তি গৈ লৈ পিনে তাই 5 ঘণ্টা সেইখিনি তেনেকৈ ভাবি চিন্তি গৈ আছিলে ট্ৰেইনত। কব জয়পুৰ পহুঁচ গৈ মুজেতো পতা ভি নাহি চলা। আৰু সেইখিনি ভাবি ভাবি গৈ থাকোঁতে কেতিয়ানো তাইয়ে জয়পুৰ পালেগৈ সেই কথাষাৰ তাইয়ে গমেই পোৱা নাছিলে। ৰাত হো চুকি থি, ৰাতি হৈ গৈছিল। জানুৱাৰী কা মহিনা থা, জানুৱাৰী মাহ আছিল। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। আৰু আমাৰ ইয়াৰ তুলনাত, তাৰমানে গুৱাহাটীৰ তুলনাত সেই ৰাজস্থানৰ ঠাণ্ডাটো অলপ বেছি আছিল। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা আমি সকলোৱে জয়পুৰলৈ ফুৰিবলৈ ওলালোঁ। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही সুনিয়োজিত চহৰ হয়। আৰু তাত ঘূৰি লৈ পিনি মই এটা কথা দেখিলোঁ যে এই চহৰখন যথেষ্ট সুনিয়োজিত চহৰ হয়। বাজাৰ সব চিধি সড়কোকে दोनों ओर है। আৰু বজাৰবিলাকত সেই ৰাস্তাৰ দুয়োটা পাৰে আছে দোকান বজাৰবোৰ। ভৱনों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया। আৰু তাৰ যিখিনি ভৱন হয়, ঘৰ হয়, সেই ঘৰবিলাকত একেটা তৰিকাতে, একেই পদ্ধতিৰে বনোৱা হয়। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। আৰু তাৰ যিখিনি ভৱন হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ অট্টালিকা হয়, এই ঘৰবিলাকত সকলোবিলাকত গোলাবী ৰঙৰ হয়। গোলাবী ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে সেই চহৰখনক গোলাবী চহৰ বুলিও কোৱা হয়। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। আৰু আজি যিখন জয়পুৰ চহৰ, সেই জয়পুৰ চহৰক বিশ্বৰ সুন্দৰতম চহৰৰ এখন চহৰ বুলি জনা যায় বা মানি লোৱা হৈছে। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। আৰু তাত यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल আৰু কিছুমান দৰ্শনীয় স্থল দেখিলোঁ, যিখিনি যেনে হাৱা মহল, সিটি पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। এইখিনি সিহঁতে চালে। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, जिसमें सैकड़ों खरोखे बने हुए है। জয়পুৰৰ যিটো হাৱা মহল হয়, এইটো বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ হয়, যিটো 5 মঞ্জিল ইমাৰত আছে, আৰু जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए, আৰু তাত শ শ झरोखे হৈছে। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। আৰু जंतर मंतरत मैं देखिलूँ जे विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। विदेशी पर्यटकসকল
যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত যেতিয়া সময় গণনা কৰি কয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আধুনিক ঘড়ী হয়, আমাৰ যিটো জেনেৰেল দিয়া ঘড়ী, সেই ঘড়ীটো চাই লৈ যেতিয়া সময়টো একেই পায় তেওঁলোক আচৰিত হৈ যায়। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। আৰু আমাৰ যি গৌৰৱশালী ইতিহাস হয়, গৌৰৱান্বিত যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসক লৈ পিনি মই নিজকে নিজে অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। আমাৰ পিছৰটো যাত্ৰা উদয়পুৰলৈ আছিল। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। আৰু যিহেতু তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাটো বহুত বেছি হয় উদয়পুৰটো, সেইকাৰণে দেশী এবং বিদেশী পৰ্যটককে আকৰ্ষণ কা প্ৰমুখ কেন্দ্ৰ আৰু দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ক'ব পাৰি উদয়পুৰটো। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। আৰু সেইকাৰণে হয়তো এই উদয়পুৰক वेनिस, जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर এই নামবিলাকেৰে জনা যায়। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। আৰু इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद, এই সুন্দৰ চহৰখন ওচৰৰ পৰা দেখা পায় মই এটা কথা অনুভৱ হ'ল যে राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते, যে আমি ৰাজস্থানৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে যে আমি কিমান ভুলকৈ ভাবিছিলোঁ সেই কথাটো তাইয়ে গম পালে। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा जो काफ़ी भव्य और विशाल है। আৰু তাত ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে আমি যিটো আটাইতকৈ ওখ স্থান पर स्थित राजमहल को দেখা, ৰাজমহলক দেখিলোঁ যিটো খুব আটক ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ আছিল। ইয় पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। আৰু সেই মহলটোৰ পৰা তাৰ যি খাল বিল চহৰখন গোটেই বিলখন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু খুব এটা মনোৰম দৃশ্য হয়। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखा। আৰু সেই তাত বীৰ মহাৰাণা প্ৰতাপৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সম্বন্ধিত বিভিন্ন চিত্ৰ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদি আমি তাত দেখা পালোঁ। তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।